हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 14 में हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम 201 टू 210। सो ये क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन किए गए हैं उन इंजीनियर्स के लिए जो गेट टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं या प्रोफेशनल इंजीनियर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यूज या टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प आउट करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिर्फ सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने पेपरा रूल्स को भी डिस्कस किया है और मुख्तलिफ सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं फर्दर आपके साथ ये 10 क्वेश्चन शेयर करूंगा। सो हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 201 says that the assumption made in the theory of reinforced cement concrete beam is that option A, all the tensile stresses are kept up by the steel reinforcement only. B, there is a sufficient bond between steel and concrete. Option C, the steel and concrete are stressed within the elastic limit. Option D, all of the above. So ये तमाम assumptions correct हैं किसी भी reinforced cement concrete beam के केस में। इसमें तमाम tensile stresses जो है वो steel reinforcement लेती है क्योंकि steel tension में strong है और concrete tension में weak है। So steel इसीलिए उसमें दिया जाता है ताकि tensile stresses को वो hold कर सके। और सफिशिएंट बॉन्ड ऑलरेडी होता है आरसीसी बीम में कंक्रीट और स्टील के बीच में एक कंपोजिट मटेरियल के थ्रू ये बनती है। द स्टील एंड कंक्रीट स्ट्रेसेस जो है उनके वो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस्ड होती हैं बीम के अंदर। अबव इलास्टिक लिमिट फिर उसमें क्रैक्स और डिस्टॉर्शन आ जाएगी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इज डी। 201 द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ reinforced cement concrete beam is based on the principle that the neutral axis is situated at the center of gravity of the given section. Option A is true, option B is false. So yes, ये आंसर A is true जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। न्यूट्रल एक्सिस इन आरसीसी beam is situated at the center of gravity of the given section. So A here is the true option. 203. The actual neutral axis of a reinforced cement concrete beam is based on the principle that the moment of the area of compression and tension zones at the neutral axis are equal. Option A is agree, option B is disagree. So moment of area for compression and tension zones at the neutral axis are equal. So A here is the correct answer for RCC beam. 204. In case of an under reinforced beam, the depth of actual neutral axis is dash that of critical neutral axis. Option A same, option B less than, option C greater than. So in case of under reinforced, जिसमें reinforcement कम होती है उसमें depth of actual neutral axis is less than the critical neutral axis. So B here is the correct option. 205. In case of an over reinforced beam, the depth of neutral axis is the same at that of critical neutral axis. So that would be more than. So false here is the correct answer, which is B. Option B is correct, which is false. 206. The moment of resistance of a balanced reinforced concrete beam is based on the stresses in option A steel only, option B concrete only, option C steel and concrete both, option D none of these. So steel and concrete both is the correct answer for this question, which is option C. The moment of resistance of a balanced reinforced concrete beam is based on the stresses in steel and concrete both. 207. In a tensile test, when the material is stressed beyond elastic limit, the tensile strain dash as compared to stress. Option A is decreases slowly, option B increases slowly, option C decreases more quickly, option D increases more quickly. So D here is the correct option. In a tensile test, when the material is stressed beyond the elastic limit, the tensile strain increases more quickly as compared to stress. So D जो है वो correct answer है. 208. The stress at which the extension of material take place more quickly as compared to increase in load is called option A elastic limit, option B yield point, option C is ultimate point, option D is breaking point. So stress at which extension of the material take place is called yield point. So B here is the correct answer. 209. The breaking stress is dash the ultimate stress. Option A equals to, option B less than, option C greater than. So breaking stress is less than the ultimate stress. So B here is the correct answer. 210. The stress developed in the material without any permanent set is called option A elastic limit, option B yield stress,
ऑप्शन सी अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन डी ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है विच इज इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस डेवलप इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 14 आपके साथ डिस्कस किया। इसमें हमने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे फॉर योर गेट एग्जाम और जॉब इंटरव्यूज और टेस्ट। तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सिर्फ सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने। इसको सब्सक्राइब करें। हम अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो हमें जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां पे फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।